So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the Hindu analysis of 1st March. So I hope you are aware that every day at 3 p.m. we come up with the Hindu analysis. It is generally taken by Govind sir, but on Saturday I take the class. So let us begin. Am I audible, visible? Everything is fine? Is my voice reaching? Okay. So if I am audible, visible, everything is fine, please write yes in the comments. अगर मेरी आवाज आ रही है आप एक बार कमेंट्स में यस लिख दो. Okay, fine. So let us begin with today's class. The Hindu newspaper first page was talking about two important things. The first is GDP growth data. That GDP grows 6.2% on rising government consumer spending. The second is 22nd missing after avalanche hits village in Uttarakhand. This is important also. In the Chamoli district of Uttarakhand, we have seen some unfortunate incident happening. So we will discuss that also in today's class. So first of all, let us discuss this. 22 missing after avalanche hits village in Uttarakhand. Now, can you please tell me? I am asking some questions. What is the capital of Uttarakhand? And recently, it has implemented a policy. What is that policy which it has implemented? Which was very much in the news. Can anyone tell me? Before I proceed to this topic. Capital of Uttarakhand. And recently, this is the first question. Yes. The second question is the policy that was recently implemented. Yes. UCC, Uniform Civil Code. Yes. Hari, you're right. Piyush. You're right. Uniform Civil Code. Capital is Dehradun. Yes. Namita, Ratan, Kabir, you all are right. Hari, yes. So Uttarakhand's capital is Dehradun. And it has recently implemented Uniform Civil Code, Article 44 of the Constitution, which was in the news. So you should be knowing about that. Right. Now let us talk about this news. So we are talking about an avalanche. So avalanche, ये landslides more or less roughly एक ही चीज होती है. मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ. जैसे माउंटेन है ना, और मान लीजिए इसका एक पोर्शन, a big portion of the rock slides down. This is called as avalanche or landslide also. Okay. So this has happened, and I hope you are aware this happens in mountainous region, of course. So if you see it carefully, we have discussed so many times that this region is famous for Himalayas, right? And it's three ranges actually. So Himalayas have three ranges. So the northernmost is called as Himadri, then Himachal, and then Shivalik. Himadri, Himachal, Shivalik. That is what you should be knowing. Okay. So this is what you should be knowing. And Himachal, in fact, is the mountain range of Himalayas also, and it is a state also in India. So Himadri is having the highest mountain on an average, highest, on an average, the peak is, or the height is highest. Then second is of Himachal, and the third is of Shivalik. So average height, maximum, so Himadri ki, then Himachal ki, and then Shivalik ki, like that. This you should be knowing. Now, if you see it carefully, this is Uttarakhand. This is the state of Uttarakhand. This ab dekh rahe ho. And here is this is Delhi, and here you will find Dehradun, right? And Dehradun se thoda sa east jaoge, so here you will find Chamoli district. And Chamoli district we have seen even in the past becoming victim of these types of landslides and avalanches. ठीक है? Nainital somewhere here you will find, एकदम east में मिलेगा, यहाँ पर बरेली से नजदीक यहाँ पे. And why is Nainital famous? From legal point of view, why is Nainital famous? Because the High Court of Uttarakhand is not in Dehradun, rather it is in Nainital. So Nainital High Court is there. Okay. Right. So we are talking about Chamoli district. Now, so basically the article says what we have seen. Uttarakhand High Court is there. Yes, Priyanshi, go ahead. You're right. So what we have seen is in a life or death race against time, teams from the Indian Army and ITBP are working to save 22 workers who are feared to be trapped beneath the ice
after a devastating glacier avalanche hit border road organization project site at Mana village in Uttarakhand. अब तो क्या होता है, मिलिट्री ही की एक यूनिट है, so there is a unit of military called as BRO, Border Roads Organization. So what is the job of Border Roads Organization? They make roads in bordering areas and these are strategically very helpful. So when I use the word strategically, it means we are talking about from military point of view, from national security point of view also. Okay, so these are the workers, they were the staff of BRO who were constructing road in Chamoli district of Uttarakhand. Ye jo square mein, this is Uttarakhand, hai na? And here is Chamoli district. But unfortunately, what happened, I have told you that here you will find the mountains and all in this region. So what happened was the avalanche happened, and because of which, unfortunately, 22 workers are trapped inside the ice. And basically, the Indian Army and ITBP. आपने नाम सुना होगा, I'm sure you must have heard about Indo-Tibetan Border Police. They are having light brown dress, light brown color का dress होता है, आपने देखा होगा. And ITBP is not a part of military. It is considered as a part of CAPF, Central Armed Police Force. वो एक चीज होती है, let me write, Central Armed Police Force. Okay. So इसके अंदर में आता है जैसा BSF हो गया, CRPF हो गया. I'm sure you must have heard it, similar to that ITBP. ठीक है. So these are different forces. So ITBP is one of them. They are mostly posted in Ladakh, Uttarakhand, Himachal, etc. region, especially bordering Tibet. Indo-Tibetan Border Police, है ना? तो देखो अगर जो तिब्बत से सटता है जो रीजन, so this is Tibet. So generally ITBP, the posting of ITBP officers happen in Ladakh, Himachal, Uttarakhand region. ये सब में ज्यादातर होते हैं ITBP के ऑफिसर्स मिलेंगे. ठीक है. So that is what you should be knowing. So both the military, यहाँ लिखा ना, both the army men, both कहाँ चला गया? BRO project site at Mana village in Uttarakhand, Chamoli, and both Indian Army and Indo-Tibetan Police Force are working their best to save those BRO officers. ठीक है, तो 22 लोग जो BRO के उनको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं इंडियन आर्मी और ITBP के पुलिसमैन मिल करके. Okay, so that is what is being talked about. According to Uttarakhand government, there were 57 civilian working at workers. तो 57 workers थे BRO की जो वहाँ काम कर रहे थे. And the BRO construction was ongoing for the past 2 years. पिछले 2 साल से वहां पर कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था. Okay. Chamoli's disaster response officer Nandkishore Joshi said that the workers had been sleeping inside a couple of containers when the avalanche hit their sheds. अच्छा, वो सो रहे थे जब उनके ऊपर avalanche आया. The victims include construction workers as well as earth mover drivers and other machine operators. So basically, there were workers, the drivers, etc. were the victims of that, and they are trying their best to save them. So Army Brigade Commander Mr. Mandeep Dhillon said that a dedicated rescue team comprising 7 officers, 17 junior commissioned officers, and 150 other personnel of IBX Brigade has been sent and all. Mana village, which is in Chamoli district. So these are the things which was actually in the news. So let's pray that they all should come alive and should be safe and all. That is what we can say. Now, let's move on to another article talking about GDP grows 6.2% on rising government consumer spending. Now, I have one question. Please tell me the GDP estimate is released by which office, under which ministry? If you have read today's article, you can answer. I'm waiting for the response. The GDP estimate, which actually is showing in this article, is done by which office, under which ministry? कोई बता सकता है? Can anyone tell me? Yes, Priyanshi Goyal has answered. National Statistical Office. Great. Under which ministry? कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? Not Finance Ministry. Yes, Namita Verma, you're also right. It is under MOSPI. National Statistical Office is under MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation.
नॉट फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, मॉस्पी आता है, मिनिस्ट्री ऑफ, हाँ नमिता वर्मा राइट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, यस प्रियंशी गोयल, नाउ यू आर राइट, ठीक है। सो ये बता क्या रहे, इंडियाज रियल जीडीपी, रियल जीडीपी होता है इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, यानी कांस्टेंट प्राइस पर कैलकुलेट किया गया, ठीक है, grew 6.2% in the October से December period, which is the third quarter 3 of the fiscal year 2024-25, ठीक है। The third quarter fiscal year picking up the pace from 5.6% growth recorded in the previous quarter, etc. ठीक है, so previous quarter 5.6 था quarter 2 में and 6.2% quarter 3 में growth हुआ, so that is what is being talked about according to NSO. However, this was considered slower than 9.5% growth in the same period in 2023. लेकिन लास्ट फिस्कल ईयर में जो क्वार्टर 3 में ग्रोथ हुआ था उसके मुकाबले कम हुआ, ठीक है, बिकॉज दे आर सेइंग कि क्वार्टर 2 के कंपैरिजन क्वार्टर 3 में बेटर ग्रोथ वाज देयर, बट लास्ट ईयर क्वार्टर 3 में लास्ट टाइम, लास्ट मींस Q3 ऑफ FY 23-24 की बात कर रहे हैं, इससे पुअर ग्रोथ हुआ है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज उस टाइम 9.5 तक हुआ था, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, ओके। हाँ 2023-24 कंप्लीट जो फिस्कल ईयर कंप्लीट हुआ था लास्ट, है ना, which actually got completed on 31st March 2024. ये समझते हैं, no, you understand this, I mean I'm not explaining because I believe that you should be knowing, I have already taught these things. 31st March 2024 इसमें जो टोटल ग्रोथ हुआ था वो 9.2% था रियल जीडीपी, which was the highest in the last 12 years. That is what you should know. अगर नहीं जानते हो देखो, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स बिकॉज मैंने आप सर्च करना इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स, ऐसे सर्च करना और लिखना करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस, ऐसे सर्च करना, you will get a light blue color thumbnail where I have explained these things. So that is why I am not repeating it again and again, because I believe that आपको इतना पता होगा कि what is fiscal year, how it is, what are quarter 1, quarter 2 and quarter 3, ये सब मैंने बताया है, quarter 4 what is that. So ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ आता है quarter 3, है ना, this is what you should know, ठीक है। Now they are saying rebound in growth momentum in Q3 was largely anticipated, etc. We have high frequency macroeconomic indicators including GST collection, public spending, electricity generation. तो एक चीज पता होना चाहिए, इसमें लिख क्या रहे कि राइज होने की वजह गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। देखो होता क्या है, आई होप यू आर अवेयर, इतना तो बेसिक आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा जीडीपी का, है ना, C plus I plus G plus NX, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये गवर्नमेंट कंजम्पशन, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये नेट एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर इसमें ये बता रहे कि देखो दो चीज बढ़ा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर, यानी ये वाला यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ा है, सी वाला पार्ट, और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। सो जब ये दोनों इंक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स जीडीपी विल इंक्रीज, because GDP comprises of C plus I plus G plus NX. So if C and G is increasing, then of course GDP will increase. That is what this article, the headline says. ठीक है, okay, है ना। हाँ, रिकवरी इन एक्सपोर्ट ऑल्सो परफॉर्मेंस, ये सब रीजन से जीएसटी कलेक्शन, पब्लिक स्पेंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी से एक्सपोर्ट भी इंप्रूव हुआ है। सो नो, आई हैव टोल्ड यू दैट जीडीपी इज C plus I plus G plus NX, NX मतलब नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो ये जीडीपी बढ़ेगा, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट भी इंप्रूव हुआ है, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, है ना। सो दिस इज व्हाट यू शुड नो। ओके, अब मैं 2-3 दिन से देख रहा था कि वी हैव सीन ऑल्दो द जीडीपी हैज इंक्रीज्ड, बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, everything is not fine there. In fact, there were reports coming in that it has broken 28-30 years of record. Actually क्या है, स्टॉक मार्केट फॉल कर गया, आपने देखा होगा, जैसे ये सेंसेक्स है, दिस इज एक्चुअली इंडेक्स ऑफ विच मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, देखो बीएसई लिखा भी है। और एक बार एग्जाम में पूछा भी था कि विच इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, आई वुड से एशियाज ओल्डेस्ट है, ना। This was asked in, I think, MHCT exam में ही पूछा था, Asia's oldest stock market, stock exchange, and 1875 में it was established, and Sensex is its index, and if you see it carefully, देखो यहाँ 24 फरवरी के बाद धड़ाम से गिरा, और एक यहाँ गिरा 28 फरवरी में धड़ाम से, so you can see बेचारा गिरते ही चला जा रहा है।
There are a lot of reasons. We are not going in that detail, but if you see it carefully, that this is actually falling. Similarly, if you see Nifty 50, this is an index of NSE, National Stock Exchange. ये बना हुआ 92 के आसपास बना था ये, ठीक है. इसको भी अगर आप देखोगे यहाँ 28 फरवरी के आसपास आराम से गिरा है. So recently we have seen the stock market crashing and all. That is what it was recent in the news. तो ये आपको पता होना चाहिए. Just have an idea. Now, let us move on to another article on the first page talking about India, European Union set year-end deadline for trade deal security defense pact. Actually, Ursula von der Leyen, who's European Union chief, she was there in Hyderabad House in Delhi. So having a meeting with the Prime Minister Modi. So most likely there will be very soon we'll be having a bilateral free trade agreement between India and European Union. So European Union की जो president है European Commission की Ursula von der Leyen, she was also present there. ठीक है ना? और what is European Union? First, if you are not aware of it, please watch this class. This is very, very important. Just go to the YouTube and search this, all about EU Career Launcher. You will get this. First, subscribe to our channel, and you will get this. ठीक है? इसको आप देखिएगा, please watch it, because this will help you get an idea about what is European Union. So basically, European Union is nothing but, this is Europe, है ना? So grouping of European countries, not all countries, but 27 European countries have come together. Here is India, and this is Europe. So the 27 European countries have come together to form European Union. So I've explained here what is European Union and all in detail. Please watch it. That would be very, very beneficial. ठीक है? Sir von der Leyen was in Delhi to lead the College of Commissioners and all. ठीक है, तो that is why she came and all. तो इसमें बस ये कि देखो progress is happening in FTA talks, the free trade agreement अभी final हुआ नहीं है. So free trade agreement is yet to be done. So once it will be done, we will discuss in detail about that. ठीक है, so we have blueprint for areas in trade, technology, investment, green growth, security, skill, mobility. So ये सब में there'll be a free trade agreement. So we will take care of these things while doing free trade agreement. What is a free trade agreement? एक लाइन में ऐसे बता देता हूँ, ऐसे समझ लो, that if India is doing a free trade agreement, so if Indian products will go to the European Union, it will have less or almost no tariff या tax वगैरह कुछ नहीं लगेगा. Similarly, European Union products in India will come free in the sense that there will be very less or no tariff or non-tariff barriers, very less import duties. ठीक है, सब कुछ हटा दिया जाएगा, so that there will be more trade business and all, more people to people trade. In fact, if there is more, then we can have like human to human interaction, business to business interaction, ये सब ज़्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, so once the free trade agreement is done, so there is a proposal. Let us see if it is done, how it will be done. ठीक है. Now let's move on to editorial, page number 6. आप ऊपर जाओगे, editorial, the necessity of mainstreaming wetland conservation. Now when we are talking about wetland conservation, which convention comes to your mind? Yes, very good, Ramsar Convention. And how many sites are there in India? And when do we celebrate? So actually recently मैंने कुछ दिन पहले ये क्लास भी बनाया था ना, 4 new Ramsar sites added है ना, ये सर्च करना, you will get this video. Ramsar Convention, very good. Priyanshi, now we are having 85 plus 4, 89. ठीक है, 2nd फरवरी. yes Priyanshi, very good. So 2nd फरवरी को ये ऐड हुआ था, ये जो बाकी 4 ऐड हुआ था this year. So this 4 were added in 2nd February 2025, and I have made a video on it. And what is the theme this year? Editorial mentioned it. He has mentioned the theme also. What is the theme of World Wetland Day this year, 2025? Anyone? What is the theme? So protecting wetland for our common future. Yes, Priyanshi, very good. Your answer is almost near to the perfect answer. Okay, preserving the protecting wetland for our common future. Okay. So basically, he's talking about, he's a scientist, retired scientist, Center for Earth Science and Studies.
And it's saying the Suomoto means by itself. The Meghalaya High Court has taken a initiative and to monitor the conservation of wetlands in the state, bringing focus back on important ecosystem. And since 2nd February 1971, we are observing World Wetland Day on 2nd February because 2nd February 1971 ko Ramsar Convention was signed and all in the Iranian city, है ना? So here is India. This is Iran. ये तेहरान उसकी capital है और यहाँ मिलेगा रामसार. And this water body is Caspian Sea. ठीक है ना? The theme was protecting wetland for our common future, है ना? It has a theme that has appropriately positioned wetland in the future and all. And he's talking about Brundtland report. Why is Brundtland report so famous? इससे क्वेश्चन आया एलेट में. देखो एडिटोरियल से कैसे our common future. So there was one question in ALET based on this topic. What is the question? So the answer to that question was Brundtland report. But what was the question? That you have to tell me. And it was asked few years back. और मैंने आपको बताया भी है. ALET में एक सवाल आया था जिसका आंसर था Brundtland report. तो सवाल क्या था? Origin of World Bank IMF. No, Piyush. Origin of World Bank and IMF is Bretton Woods Conference. And I have taken class on Bretton Woods Conference also. Environment protection, Avantika. Yeah, your answer is actually generalistic. Maybe your answer is correct with this perspective, but एक खास special keyword था, which I want to hear from you. So the question was actually that a particular thing was first used in which report? So the answer was Brundtland report. चलो मैं ही बताता हूँ. Sustainable development. Yes, TNC, very good. So the question was the concept of sustainable development was first discussed where? And there were 4 options here they had given or answer the Brundtland report, Our Common Future 1987. Yes, Priyanshi, Avantika, you all are right. Now you all are right. ठीक है. तो ये सब कुछ आपस में ही तो लिंक्ड है. देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही तो लिंक है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. तो अगर आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कहो तो चलेगा. आई मीन दैट्स आल्सो द आइडिया बिकॉज़ ऑल आर द थिंग्स एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना? देखो डिफाइन किया ना वर्ड, ये सब बात लाया गया था. So basically that is what the idea is, that they are talking about this Our Common Future Brundtland report where it talked about sustainable development and all, है ना? तो उसके बाद रियो समिट, अर्थ समिट हुआ, वहां भी ये सब डिस्कशन हुआ. Wetlands one of the most biologically productive ecosystem, provided multiple benefits and all. तो बहुत सारे फायदे होते हैं इसके. ठीक है. तो क्या क्या बेनिफिट है देखो, अब इतना डिटेल नहीं जाना है. देखो ये वाली जो क्लास है ना, ये वाली क्लास देख लेना. ये कहाँ चला गया? इस क्लास में मैंने सब बताया है. आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इकोटोन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ wetland, why it is so important to protect wetlands, why are we so much concerned about protecting that. ठीक है, that is what you should know. हाँ, तो वही बता रहे since 1900 50% of the area under wetland have been diverted to accommodate various other things. इन्हें wetland को encroach किया गया है किसी और काम के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, मतलब और लोग रहने लगे उसमें, तो दैट इज प्रॉब्लमेटिक एंड ऑल. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, है ना? फिर COP 14 जो रामसार कन्वेंशन का COP 14 हुआ था वुहान चाइना में एंड जेनेवा स्विट्जरलैंड में, दे आर टॉकिंग अबाउट दैट. ठीक है. फिर सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, if you have not watched this video, please watch it. आप सर्च करना SDG career launcher and watch this. Here all we have discussed all 17 sustainable development goals. What are the targets, when it target year when it should be achieved, है ना? इसको डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया. ये जरूर देखिएगा, SDG वाला इंपॉर्टेंट होता है, कई बार न्यूज में रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. ठीक है. फिर एक और जगह UNFCCC की बात करें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. फिर रियो समिट की बात किया है ना, 1992 अर्थ समिट. So for that watch this class. ये वाला देखिएगा. ठीक है. And that would be very very beneficial. और इसमें एक चीज और उन्होंने बात किया, देखो UN decade on ecosystem restoration कहीं पे बात किया ना, align with UN decade on ecosystem restoration, है ना? ये क्या है, 2021 से 30 का एक गोल है. अगर आप देखो 2021 से 2030 तक का गोल है, United Nation Decade on Ecosystem Restoration by UN Environment Program.
ठीक है. So this is a decade by UNEP. They are celebrating UN decade on ecosystem restoration. Okay. And और FAO का भी रोल है इसमें, बट मेन UNEP का रोल है. And where is UNEP headquartered? UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है? Please tell me, because these are asked in exams. Where is the headquarter of United Nations Environment Program? Not in Geneva. Actually, most of the headquarters are in Geneva, but UNEP's headquarter is not in Geneva. Now, I'll give you a hint. It is in some third world countries, not in a developed country like France, Germany, Italy, or European or American country. Itna main hint. Yes, Namita, very good. It's actually in Kenya, Nairobi. ये India है. So this is Africa continent. And this is Kenya. Kenya की capital है Nairobi. Nairobi इस तरह स्पेलिंग होता है. ठीक है. Yes, Namita and Priyanshi, you both are right. ठीक है. तो ये सब पता होना चाहिए. These are the basic things which are generally straightforward asked in the exams from editorials. तो ये आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए. ठीक है. So global changes resulting from COVID-19 pandemic has greater knowledge and greater knowledge about impact of biodiversity loss etc. तो इस सब की बात कर रहे हैं. इसमें बहुत डिटेल नहीं जाना है. ठीक है. और बता रहे हैं कि 2023 में इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ रामसार एंड 2023 में वी हैव 75 रामसार साइट्स. But he is quoting an old figure. Now in 2025, today we are having 89 Ramsar sites. This you should remember. है ना? याद होना चाहिए. So he's saying that there are a lot of they are distributed from coast to Himalayan. है ना? So you will find Ramsar sites even in coastal areas in Himalayan region. Even Upper Ganga River has been designated as upper portion of Ganga has been designated as Ramsar sites. है ना? हाँ, so just he's saying identification of Ramsar does not necessarily contribute to its conservation, है ना? सिर्फ नाम आइडेंटिफाई करने से कुछ नहीं होता. We have to work hard for that, है ना? The area under Ramsar sites is covers इतना area and all. Just have an idea of area और याद रखना है. बस numbers याद रखना है. Currently we are having 89 Ramsar sites today. ठीक है. The area under is not a static figure. It keeps on changing and all. And of course, when we keep on adding new Ramsar sites, the area under Ramsar wetland of course increases. तो इसमें कुछ खास नहीं बताने के लिए. So these are the things you should know. The global level इसमें कोई स्पेशल चीज होगा, I will discuss. हाँ. एंड अच्छा ये सब वर्ड आपने सुना होगा, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स. जब भी आपने ये देखना, इसका मतलब ह्यूमन मेड, मैन मेड फैक्टर रीजंस होता है ना. कहा जाता है कि दिस इज द सिक्स्थ मास एक्सटेंशन कहते हैं हम लोग अभी के जो एरा है, सिक्स्थ मास एक्सटेंशन. So we are killing, actually we are now, humans are responsible for killing a lot of species of flora and fauna, means plants and animals. So they are calling it as anthropogenic, anthropocene era और क्या क्या कहते हैं सब. anthropo जैसे लिखा हुआ ना, human induced है. Whatever nowadays climate change is happening because of anthropogenic factors, means human induced factors and all. ठीक है. फिर नीचे में आर्टिकल है the steps that will shape India's AI ambition. So again, they are talking about artificial intelligence. We have discussed so many things about artificial intelligence and all. And a heart of Bangalore software developer find themselves racing against time to outbid Chinese rivals for major AI. China ने कौन सा बनाया है AI का बताओ अभी recently, which has actually defeated Chat GPT, Gemini and etc. as far as expenditure is concerned. So they have used lesser money or lesser resources to build something similar to Chat GPT. Yes, DeepSeek. Very good. Yes, Priyanshi, Namita, Piyush, you all are right. So that is what they are talking about. Despite being part of skilled workforce, deals often slip away due to capabilities Indian firms struggle to match. This is not just a single developer's dilemma. It is a glimpse into India's crossroad and all. ठीक है. तो ये बता रहे हैं, और बैंगलोर को इंडिया का सिलिकॉन वैली भी कहते हैं and all. ना, so these are the things you should know. सर्विस एंड कंसल्टेंसी, इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगा सो वेल आई विल डिस्कस. हाँ, तो एआई में कुछ कुछ इश्यूज है, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है. इंटरमीडियरी लायबिलिटीज आर एट द फोरफ्रंट ऑफ एआई डिस्कशन इंडिया. अब देखो लायबिलिटी का भी इशू होता है. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मैं बताता हूँ, मान लीजिए एआई ड्रिवन कार बनाया गया, मेड एआई ड्रिवन कार दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग विल ड्राइव द कार. इमेजिन दिस कार हिट्स समवन एंड द पर्सन डाइज ड्यू टू एन एक्सीडेंट.
Now the question is who should be liable for that? Legal liability किसकी होगी? Because car was not driven by the car owner. जो ओनर वो तो नहीं चला रहा था, तो मशीन चला रही थी, है ना? Now the question is should we sue that driver, the company? उस गाड़ी के कंपनी पर पे केस कर दिया जाए जिसने कार बनाई कि आपकी वजह से ऐसा हुआ. So that is what they are talking about, intermediary liability. किसकी liability होगी if the AI goes wrong? If something goes wrong, done wrong by the artificial intelligence, then what will happen? Tension has increased since with recent Indian app developers filing against complaint Google before Competition Commission of India, है ना? तो actually एक body है Competition Commission of India, and this imposes penalty on those who violates anti-competitive practices, those who violates anti-competitive laws. So in fact, CCI had earlier imposed fine on Google, पहले भी impose कर चुकी है, और बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनी पे for let's say for not following the ethical practices and all. So CCI का ये काम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, just have an idea. India has already localized significant portion of AI value chain sector. अब इसमें कुछ खास नहीं जाने का. हाँ, एक चीज आपको पता होना चाहिए. देखो होता क्या है कि whenever something new comes, European Union is ahead in making laws. जैसे privacy laws European Union का सबसे strict माना जाता है, ठीक है? फिर वो अपना जो भी law, data protection laws लाते हैं. So everything when I talk about AI laws, है ना? So safety of AI laws. So all these things में जो ये सब जो strict regulations बनाने में European Union is way ahead. हमेशा याद रखिएगा European Union सब में काफी आगे होते हैं, ठीक है? So that is what you should know. इसमें चाइना डोमिनेंस इज देयर एंड ऑल, ठीक है? ईओपी मैंने बता दिया है ना, ये वाली क्लास देख लीजिएगा. प्लीज वॉच द यूरोपियन यूनियन क्लास, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल. I'm just seeing anything special. Now let's move on to the side article. The side article talking about truce under fire. Truce मतलब क्या होता है? Agreement followed by a war, followed by a war or a battle or something like that, fight. यानी मतलब ट्रूस मतलब होता है समझौता कर लेना, पीस डील टाइप, कुछ जंग हुई या कुछ कन्फ्लिक्ट हो उसके बाद. बट ट्रूस अंडर फायर यानी क्या कि हो सकता है कि ट्रूस जो हुआ उसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है, मे बी देयर वर सम थिंग्स दैट मे बी अगेन द वॉर विल स्टार्ट और समथिंग लाइक दैट. ऑल साइड्स मस्ट इंश्योर दैट द वॉर इन गाजा एंड्स परमानेंटली. तो ये एडिटोरियल राइटर ने लिखा है कि सारे साइड्स ये इंश्योर करें कि हमेशा के लिए वॉर खत्म हो जाए. वॉर इज नॉट, टुडे इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, है ना? As the first phase of the Israel-Hamas ceasefire comes to end on Saturday, there are growing signs that the already fragile truce is under enormous strain. Fragile मतलब कमजोर, weak. तो सैटरडे को जो सीज फायर का जो पीरियड था वो खत्म हो गया. अब ये फियर किया जा रहा है, देयर आर फियर्स दैट ऑलरेडी वीक, द एग्रीमेंट वाज क्वाइट वीक एंड मे बी द ट्रूस विल कम अंडर एनॉर्मस स्ट्रेन, मतलब और उस पर जोर पड़े और वो टूट जाए. मतलब कहने का मतलब है कि मे बी द ट्रूस विल बी ब्रोकन और समथिंग लाइक दैट. So that deal was done in mid-January and all, and the understanding was that it would be implemented in 3 phases. So उस टाइम पे अंडरस्टैंड किया गया था कि 3 फेज में होगा, ठीक है? In the first phase, Israel was required to reposition some of its troops, letting displaced Palestinians move from south to north and release more than thousands of security prisoners and all. तो ये सब बता रही फर्स्ट फेज में क्या कहा गया था, फिर सेकंड फेज में क्या गया था, है ना? बोथ साइड्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द वॉर टू एन एंड, और थर्ड फेज में इट्स अबाउट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गाजा. तो ये 3 स्टेप में बात कही गई थी. तो फर्स्ट स्टेप ही इंप्लीमेंट हुआ था, है ना? Repositioning of troop etc. In the last first 42 days, both sides struck their commitment despite challenges. तो शुरू के 42 डेज में दोनों ने अपना अपना कमिटमेंट को पूरा किया. हमास रिलीज 38 hostages, Israel freed hundreds of prisoners. तो जो कहा गया था वो लोगों ने किया. That is what it says. So here is India. This is, you can say, Israel. आप देख सकते हो ना. This is West Bank. ये वाला रीजन में दिखा रहा हूँ, है ना? ये देखना. So this is West Bank. इसको West Bank कहते हैं. We have discussed so many times, but let me show. And ये वाला जो है, this one is Gaza. So Gaza और West Bank को together they call it as Palestine. और जो रेस्ट बाकी बचा, मतलब मैं उसको दूसरे पेन से कर देता हूँ. ब्लू पेन भी तो यूज हो चुका है ना. लेट मी मेक इट विद ग्रीन पेन. तो रेस्ट जो बचा ना, ये इजराइल है, ठीक है? ओके.
ऐसे मैंने क्लास लिया ये वाला, इस क्लास में मैंने डिटेल में मैप वगैरह बताया है. Please watch this class, Israel Palestine career launcher. You will search, you will get this video where I have discussed in detail about the map of West Bank, Gaza, etc. ठीक है. तो मेन जो वॉर हुआ था वो यहाँ गाजा में हुआ था. और ये है इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला. दिस वन इज सिनाई पेनिनसुला ना, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट. ठीक है. तो ये जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर कई बार न्यूज में रहता है, ये गाजा और ये इजिप्ट का, यहाँ पे जो बॉर्डर है, दिस इज कॉल्ड एज, व्हाट इज दिस कॉल्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द बॉर्डर, इट वाज वेरी मच इन द न्यूज, राफा बॉर्डर. ठीक है. और ये सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का. ठीक है. तो राफा बॉर्डर वाज वेरी मच इन द न्यूज. शॉर्ट नोट्स, यस रतन कबीर, आप बना लेना, बहुत लंबा लंबा मत लिखना, बट शॉर्ट नोट्स जो कीवर्ड मैं बता रहा हूँ, जैसे राफा बॉर्डर, सो इट इज बिटवीन गाजा एंड इजिप्ट, लाइक दैट यू शुड मेक स्मॉल शॉर्ट नोट्स. ठीक है. सो दीस आर द थिंग्स यू शुड बी नोइंग. इसमें और कुछ डिस्कस करने का है. हाँ, नेतन्याहू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, आई होप यू आर अवेयर. एंड जस्ट रीड समथिंग अबाउट 7th अक्टूबर अटैक्स ऑफ हमास, ये पढ़िएगा. And Donald Trump has said the proposal by United States President Donald Trump to own Gaza and ethnically claims that step 2.3 million sector have been hardened and all. तो इसमें भी कुछ खास, if there is anything discussed from exam point of view. थोड़ा सा देखिए, हमास के बारे में पढ़िएगा विकिपीडिया में, they have already asked questions. इसकी में विकिपीडिया में पढ़िएगा, इस विकिपीडिया का 2-3 पैसेज, फर्स्ट पैसेज पढ़िएगा, 2-3 पैसेज. ओके. Now let's talk about another article. Supreme Court set aside dismissal of 2 women judicial officers. Actually क्या हुआ था कि women judges, lower judiciary के judges थे, उनको रिमूव कर दिया गया था in the state of मध्य प्रदेश. So they were removed for inefficiency and misconduct. इस रीजन से रिमूव कर दिया गया था. मतलब वो शायद काम पे नहीं आ रहे होंगे, they were not coming on in the office. But the reality was कि they had suffered something, जैसे बैक टू बैक ट्रॉमा, एक को मेडिकल इश्यूज था, जैसे मिसकैरेज हो गया था चाइल्ड, डेज इन आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट में कोविड के कारण एंड ऑल, एंड हर ब्रदर बीइंग डायग्नोज्ड विद कैंसर, उनके भाई को कैंसर हो गया था, एंड दैट इज व्हाई दिस लेडी जज वाज नॉट एबल टू कम टू द कोर्ट और समथिंग लाइक दैट. तो उसके बाद उनको रिमूव कर दिया गया था, लेकिन द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्चुअली रीइंस्टेटेड देम बैक. This bench was headed by Justice B.B. Nagratna. I hope you are aware. She is going to be the first woman CJI. आपको पता होगा, है ना? So in 2027, she will be the first woman CJI if the seniority rule is followed. तो उन्होंने वही क्या कहा कि उन्होंने फैसला पलट इसलिए दिया, एंड उन्होंने कहा कि नहीं, बिकॉज दे वर अफेक्टेड बाय मेनी इंसिडेंट्स, है ना. तो जो लेडी जज थी उनके साथ बहुत सारे लाइफ में इश्यूज हुए थे, है ना. The top court said that gender cannot be an excuse for poor work performance by women judicial officer. Certainly, it was a critical consideration. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई वोमेन है तो कम काम करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. मतलब ऑफ कोर्स उनको पूरा काम करना चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वोमेन. बट यहाँ पर जो है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस था. मतलब इनएफिशिएंट होने का जो रीजन था वो ये था कि देयर वेर, है ना, मिसकैरेज हो गया था, आईसीयू में थी कोविड की वजह से, एंड ब्रदर को कैंसर हो गया. सो दैट इज व्हाई द जुडिशरी लिसन टू दिस मैटर, द सुप्रीम कोर्ट, एंड ओवरटर्न्ड इट कि ये स्पेसिफिक केस है ना, मतलब. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड. ठीक है. तो सुप्रीम कोर्ट के टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 34. ये भी करके पूछा था, है ना. अभी जस्टिस वही आपको पता होना चाहिए कि जो जस्टिस नागरत्ना अभी जजमेंट सुनाया है ना. सो देयर आर ओनली 2 वुमेन जजेस करेंटली इन द सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द टोटल 34. आगे सब पहले तो थोड़ा ज्यादा थी, अब रिटायर करके बहुत सारी, है ना. जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस बीवी नागरत्ना इज देयर, एंड बेला त्रिवेदी विल आल्सो रिटायर वेरी सून, विद इन 2-3 मंथ्स. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. तो ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्बिट्रेरी था उन लोगों को रिमूव करना. टर्मिनेशन ऑफ 2 वुमेन जजेस, है ना, relative arbitrary and all. The next article, we need to add 35-40 fighter jets every year. A private sector can play a bigger role, says the IAF chief. अब वो आपने देखा होगा, IAF chief कुछ दिन पहले नाराज थे. I mean, he was not very happy with HAL, Hindustan Aeronautics Limited. Hindustan Aeronautics Limited is the public sector unit of India, headquartered in Bengaluru.
which manufactures Tejas aircraft, है ना? Tejas का आपने नाम सुना होगा. Tejas is a fighter jet, है ना? So he was a few days back. He was not very happy with HAL, Hindustan Aeronautics Limited. So that is why now he's saying कि है ना, तो okay, we need at least 40 fighter jets every year. And इसमें तो जैसे अगर हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तो एक पीएसयू है ना, यानी पीएसयू मतलब इसमें 50 more than 50% शेयर गवर्नमेंट का होता है. So he's now saying that we can expect something better from private organizations. Now private company can also come and help us in manufacturing these jets. ठीक है. एंड वर्ल्ड पेज में एक आर्टिकल तो ये काफी ज्यादा कल से न्यूज में व्हाट हैपेंड वाज कि डोनाल्ड ट्रम्प एंड हियर इज जेडी वांस द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए एंड दे हैव हीटेड आर्गुमेंट विद Zelensky is the I'm sure you are aware of this, that Volodymyr Zelensky is the president of Ukraine. So in Russia-Ukraine war, when Joe Biden was the president, he was getting a lot of support from USA. But now I think the support is going to be stopped and Donald Trump is now praising even Putin and all. ठीक है, US President Donald Trump in fact was angry. We have seen clashes, oral clashes हो गया, shouting, an extraordinary shouting match in the Oval, leaving efforts to end war. मतलब थोड़ा सा ये न्यूज में काफी था कि there have been some heated exchange debates and all. तो अब देखो क्या होता है. Let us see what will happen in this Russia-Ukraine war. So this is all about today's class. Thank you everyone. Tomorrow I'll be meeting you at 3 p.m. Where I'm discussing the weekly current affairs. So we have already done the weekly current affairs of January part 1, 2, and 3. So we'll discuss it further on Sunday, tomorrow 3 p.m. So this is all about today's class. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.